Okay, so let's get started. Hi everyone, my name is Raj and I'm a tech lead at Top and like Google developer expert for the web technology and Firebase. And आज के इस particular session में I'll talk about Firebase कि like Firebase है क्या चीज, how we can use the concept of Firebase for making building scalable data applications or maybe any kind of solutions we can build with the help of Firebase. So I'll start with the overview, like कैसे अपन start करेंगे. Like first मैं बताऊंगा कि like actually Firebase है क्या चीज, Firebase का use क्या है, why we are using the concept of Firebase, how we can make the scalable solutions with the help of Firebase, and then we create a simple applications with the help of Firebase की like क्या कैसे functionalities और services को use लेके अपन Firebase पे work कर सकते हैं. So I guess almost like जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे और मे भी जो वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी के पास एक डेफिनेटली एक रफ आइडिया होगा कि लाइक आई वांटेड टू बिल्ड द सॉल्यूशंस फॉर लेट्स से दिस स्टार्टअप और मे बी दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो देयर आर मल्टीपल आइडियाज लाइक आप सबके माइंड में होंगे और कुछ ना कुछ आइडियाज पे आप वर्क करना भी चालू कर होगा बट देयर माइट बी लॉट ऑफ लाइक क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक जैसे कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है फॉर द स्टार्टअप और मे बी I want to build something for XYZ kind of things. So idea तो सबके पास है and then idea पे आपको work करना पड़ता है तो then we need to focus on the technology, like what type of technology we need to select for the front end, for the back end, or maybe what type of database I can go with. So like there are multiple things like start कैसे करना है, technology कौन सी यूज लेनी है, because if I talk about the development, so we have a three type of development: front end, back end, and the database part. So front end में आप कोई भी technology use ले सकते हो, back end में भी even we have multiple languages, multiple services that you can use, and the database we have an n number of database like आप PostgreSQL database ले सकते हो, MongoDB ले सकते हो, MySQL ले सकते हो. So there are a lot of confusion if I talk about whenever we are working on the startup or maybe whenever we are working on a ideation part. So let's say somehow you have decided the technical stack, the languages for the front end, for the database. Then you need to write a lot of amount of code. कि code लिखते रहो, code चलता रहेगा, करते रहोगे. So ये एक generic एक process होता है for the applications that we like. First we need to select the technology, then we need to work on it, and then we need to write the code. And कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि लाइक कोड लिख लिया, एप्लीकेशन चालू भी हो गया एंड सडनली कोड फट गया है, ऐसे में भी कुछ इश्यूज आ गए टेक्निकल टर्म में, तो कुछ समझ में नहीं आता कि लाइफ में क्या करना है या फिर कोड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें. सो देन वी नीड टू वर्क ऑन द लाइक लाइक बहुत सही नहीं है बिकॉज वी कैन बिल्ड एनी सॉल्यूशंस एंड कोड भी लिख लिया बट सडनली कोड फट गया तो इश्यू आ जाएगा. सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी नीड टू वर्क ऑन द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट की कोड फटा कहाँ है, इसको कैसे पैच करना है, इट्स जस्ट लाइक हाँ उसको रिजॉल्व करना है क्या, स्कोप रह गए, वेरिएबल कौन से यूज हो रहे थे, कौन से अनयूज वेरिएबल थे जिनके कारण इश्यूज आ रहा था. So we need to identify the work, optimize the solutions, working on a lot of things in terms of कि like क्या क्या scope रह गया था in terms of the case use case होता है ना कि like application development करते हैं और we are working on a competitive. So there are let's say more than 10 use cases and जो आपका program होता है वो three use cases को fill कर रहा है but ये कि 7 use case को fulfill नहीं कर रहा है. तो वही सारे यूज केसेस होते हैं कि लाइक आपके एप्लीकेशंस कितने यूज केसेस पे चल पा रही है. सो ये सारा ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट होता है. दिस इज अ हेडेक काइंड ऑफ थिंग्स एज बीइंग एज अ डेवलपर्स कि लाइक पहले टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करना एंड देन वी नीड टू बिल्ड द सॉल्यूशंस एंड सडनली कुछ कोड फट जाए या फिर कुछ चैलेंजेस आ जाए. So it's all about then optimization part, and this is a kind of journey as of now we as a developer doing in our day-to-day life whenever we are working on uh, building any applications and all. So being as a developer, होते ही हैं कि like we are engineers and we need to solve the problems. So engineers का काम ही है problem को solve करना. So that's why Firebase came. So Firebase is just like as a it's a platform. With the help of this platform, you can make more scalable solutions. So generally Firebase क्या करता है कि like it will provide backend as a services. So let's say if you want to make a
applications, you just need to focus on the front end part, like application specifically. You don't need to worry about the back end part, like database में applications का data कैसे store होगा या APIs क्या होगी और maybe the security part, data का scalability कैसे रहेगा, वो सारा आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, Firebase पूरा का पूरा आपके लिए मैनेज करेगा. It's just like Firebase is a backend as a service, so you don't need to worry about the backend part. You don't need to worry about the database part and a lot of things related to the security. So you just focus on the front end part, means the UI UX, application का look कैसा लगता है, उसका आप Firebase से connect कर दो और उसके बाद आप Firebase को use दे सकते हो. And like Firebase has a mission to help the developer succeed in terms of like I don't need to work on the backend, writing my own backend. Like just a backend developer होते हैं, so we need to create a REST APIs. So we can create a REST APIs with the help of multiple programming languages like Python, Node.js, Go, uh, PHP. There are multiple languages that we can use for making our backend business logic. But अगर अपन Firebase use ले रहे हैं, so you just need to focus on the front end part. You don't need to worry about the back end business logic. वो पूरा का पूरा Firebase दे रहा है. So that's why like Firebase has a mission to help the developer succeed. You just need to focus on the productivity, means the front end part. Remaining back end database, ये सारा का सारा Firebase आपको provide करेगा. And then, like whenever you are working on a front-end technologies, let's say if you are working on a mobile applications like iOS or Flutter, Android, Kotlin, so आप इनको use ले सकते हो as a Firebase. Or if you are or a web developer, or maybe if you are working on a game development platform like Unity, you can use Firebase. So as I mentioned, like Firebase पूरा का पूरा आपका backend का bundle है. It's just like a बहुत सारी backend services है. You don't need to worry about like खुद के Node.js के backend services लिखना और ये सारा part. तो Firebase की multiple services है. ये सारी services को उन्होंने तीन category में define करा हुआ है. पहला है build better application. With the help of these like services, you can make more uh, fast, robust, and better applications with the help of these services. Like Firebase का एक authentication है जिसके थ्रू आप यूजर को authenticate कर सकते हो, like sign in, sign out, log in, log out, forget password. ये सारी functionalities आप अपने applications और website में enable कर सकते हो with the help of Firebase authentication. और होस्टिंग इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपकी वेबसाइट है उसको आपको होस्ट करना है और if you are working on a database part, so here we have a two types of database like cloud Firestore and the real-time database. और या फिर आपके पास पीडीएफ फाइल, इमेजेस फाइल, ऑडियो फाइल है, वो आप अपलोड करना चाहते हो, देन यू कैन यूज क्लाउड फाइल स्टोर एंड sorry, cloud storage. So there are multiple services under the build better applications. So if ये सारे services के थ्रू आप जो है applications को बहुत ज़्यादा fast development कर सकते हो और you don't need to invest your time for making a back end business logic, rather than you can directly focus on the front end part और ये सभी services को आप connect कर दो और you can make the applications. So जैसे आपने ये सर्विसेज को यूज लेके एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिया, then we need to focus on the application's quality, how we can focus on the quality. So then we have a services like Analytics, performance monitoring, test lab, app distribution. So Analytics in terms of here you will get the real time cache report, performance monitoring की like आपको एक performance report मिलेगी for लेट्स से कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट में वी हैव 5 पेजेस, तो पेज वन पे लोगों को पेज वन विजिबल होने में कितना टाइम लग रहा है, पेज टू को रेंडर होने में कितना टाइम लग रहा है, और मे बी वंस यूजर लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक करता है और उसको नेविगेट कर रहा है डैशबोर्ड पे या होम स्क्रीन पे, तो उसको कितना टाइम लग रहा है. इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस, तो वो सारा आप ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. और या फिर इफ यू आर वर्किंग ऑन मोबाइल एप्लीकेशंस, तो जनरली वी एज अ मोबाइल डेवलपर्स, तो एक एप्लीकेशन अपन को ऐसे क्रिएट करनी होती है कि जो सब डिवाइस पे सपोर्टेबल हो, मीन्स द सैमसंग डिवाइस, गूगल डिवाइस और मे बी द ओप्पो और एम आई वाले सारे डिवाइसेस पे. तो जनरली क्या होता है कि लाइक ये सारी टेस्टिंग होती है वो डिवाइस परचेज करके करी जाती है. एंड देन दिस इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइक मेरे को एक एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए मेरे को मार्केट में जाके जितने भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस, सबको परचेज कर लिया, सबने इंस्टॉल करके चेक करा, वो एप्लीकेशन कॉम्पैक्टेबल और सपोर्टेबल है.
Rather than you can use test labs here, you can check out the multiple application devices and then you can test your applications की like ये device का कितने application compatible है क्या इनके lag हो रहा है क्या क्या issues or advantage or you will get app distribution in terms of कि like EP type of testing कि let's say कि A type of users को मेरे को ये services offer करनी है B type के users को मेरे को Y services offer करनी है that we can use the app distributions. तो ये सारा हो गया कि लाइक अपन एप्लीकेशन बना दी वी एप्लीकेशन की क्वालिटी पे भी फोकस कर दिया देन वी नीड टू फोकस ऑन द यूजर एक्विजिशन कि लाइक कैसे अपन ग्रो कर सकते हैं और यूजर को कैसे एक्वायर कर सकते हैं सो हियर वी हैव सर्विसेज लाइक एनालिटिक्स प्रोडक्शन क्लाउड मैसेजिंग इन एप मैसेजिंग रिमोट कॉन्फिग एबी टेस्टिंग और डायनेमिक लिंक्स जैसे एनालिटिक्स इज मोर अबाउट कि लाइक यू विल गेट द रिपोर्ट कि आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन में कितने यूजर आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम विच लोकेशन लोकेशन कैन बी सिटी कंट्री और आपको डिटेल्स भी दिखेगा कि लाइक उनका डिवाइस कौन सा यूज ले रहे हैं कौन सा स्क्रीन रेजोल्यूशन है there are multiple parameters you will get inside the analytics section. Similarly, for the cloud messaging, you can send the push notifications जैसे आपको Zomato, Swiggy, and WhatsApp पे जैसे आपको notification आती है कि like किसी ने person ने आपको message करा, you will get the notifications. So similarly, you can do make the feature notifications with the help of cloud messaging. इन ऐप मैसेजिंग भी रहता है जिसमें आप कस्टमाइज मैसेजिंग करते हो टारगेटेड ऑडियंस पे और रिमोट कॉन्फ़िग इन टर्म्स ऑफ कि लाइक मेरे को फ्यूचर में लाइक कुछ चीजें चेंज करनी है तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वहां से मैनेज कर सकता हूँ ए बी टेस्टिंग इज मोर अबाउट टेस्टिंग वाला पार्ट डायनेमिक लिंक इन टर्म्स ऑफ कि लाइक ये क्या होता है कि लाइक जैसे आपको व्हाट्सएप एक लिंक आए और वो लिंक आप ओपन करोगे एप्लीकेशन में चले जाए और उस पर्टिकुलर यूआई का लोड कर दो इट्स ऑल अबाउट द डायनेमिक लिंक्स तो ये सारा पार्ट है फायरबेस पे भी हियर वी हैव थ्री टाइप ऑफ कैटेगरीज लाइक पहला है build better applications with the help of these applications you can services you can make the applications very fast then you can focus on the quality and then you can focus on the grow and engage in the user acquisition part. So talking about specifically for Firebase, for the web developers, so here we have a services like you can use Firebase authentications, cloud Firestore, real-time database, cloud storage, hosting, cloud functions, extensions, cloud messaging, and the dynamic links. So एक एक करके मैं आपको एक बार ओवरव्यू दूंगा कि लाइक जैसे I'll give it a simple example. Let's say we as a web developer we have created a website. उस वेबसाइट में अपन को एक फंक्शनलिटी ऐड करनी है जहाँ यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है अकाउंट लॉग इन कर सकता है पासवर्ड रीसेट कर सकता है और पासवर्ड अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकता है ये सारा फंक्शनलिटी भी नहीं है इट्स मोर अबाउट द ऑथेंटिकेशन पार्ट तो जनरली इफ आई गो टू द ट्रेडिशनल अप्रोच तो मेरे को क्या करना पड़ेगा डेटाबेस रखना पड़ेगा उस डेटाबेस में यूजर की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी उनके पासवर्ड ईमेल ये सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी और फिर मेरे को एक एपीआई बनानी पड़ेगी बैकएंड बिजनेस लॉजिक फिर जब यूजर लॉग इन करेगा तो फिर को डेटाबेस में चेक करना कि वो यूजर अवेलेबल है या नहीं अगर उसका अवेलेबल है तो देन वी नीड टू गिव द एक्सेस अगर यूजर का अकाउंट क्रिएट करना है तो वी नीड टू ऐड अ रिकॉर्ड इन आवर डेटाबेस तो ये सारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट होगा एंड देन जनरली क्या होता है कि जो ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट होते हैं इट्स अ वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ थिंग्स कि लाइक आपका सिस्टम हैक नहीं होना चाहिए अगर ये ऑथेंटिकेशन हैक हो गया दैट मीन्स कि लाइक सब कुछ सिस्टम में हैक I'll give you the example like LinkedIn, Twitter, GitHub. तो इनके ऑथेंटिकेशन है तो ये इन्होंने बहुत वो रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग क्योंकि अगर ये ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो देन लाइक यूजर कैन एक्सेस योर लाइक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो वो सारा पार्ट होता है तो देन इट्स लाइक ह्यूज हेडेक इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशंस बिकॉज पूरा का पूरा ऑल सिस्टम बनाना इट्स बहुत चैलेंजिंग टास्क है so what you can do, you can use Firebase authentications. So Firebase authentication में क्या है कि we have a some like set of functions. वो सारे set of functions को आप directly call कर सकते हो और call करके पूरी की पूरी functionality वो आप inbuild कर सकते हो. अब ये है कि Firebase authentication ले रहे हैं तो अपन को कोई REST API बनाने की जरूरत नहीं है. We don't need to manage the database or managing the user informations. वो सारा का सारा Firebase authentication खुद manage करेगा. And one of the best thing about Firebase कि you can authenticate your user with social media accounts like
You can authenticate your user with Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, GitHub, and even you can authenticate your user with mobile number. कि generally आपने देखा होगा कि आप application में login करते हो तो generally they will ask you the mobile number and then you will get the OTP and then once you pass the OTP and then you will get an access. So similarly, you can with the help of Firebase authentication, you can authenticate the user with the help of third-party services provider. So ये सारा आप कर सकते हो Firebase authentication में. I'll give you the simple example. Generally, yeah, right now I'm using Firebase SDK 8. So ये JavaScript का part है. So in the JavaScript we can create a variable with the help of let keyword. So मैंने दो variable define करे जो है email and password. Here I have defined the email and password. And then, as I mentioned, like Firebase के authentication में we have some set of functions. सारे directly वो function को call कर दो, आपकी functionality achieve हो जाएगी. So this is an example for creating a user account. So मैं user account create करना चाहता हूँ user का with the help of email and password. So here we have a method name is create user with email and password. This is the method name, and inside this method we need to pass two parameters. तो पैरामीटर रहेंगे अपने email and password, and that's it. और ये पूरा का पूरा ये जो लॉजिक है ये वर्क करता है अपने प्रोमिसेस के थ्रू। तो प्रोमिसेस को वी कैन हैंडल विद द हेल्प ऑफ डायनामिक कैप्स लॉक। तो इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हैं फाइबर्स ऑथेंटिकेशन। तो एट द एंड लाइक ये सारा सेशन होने के बाद आई गिव यू द एग्जांपल कि लाइक कैसे अपन प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं वो भी मैं वन बाय वन बताऊंगा। So the next one part is the file cloud Firestore. So generally क्या होता है कि let's say we have created a website और website create कर दिया login की functionality we can achieve with the help of Firebase authentication. Now यूजर ने लॉगिन करा, यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन होती है अलग से जो ऑथेंटिकेशन के बाद यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है यूजर का एड्रेस और मे बी यूजर की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो वो सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए वी नीड अ डेटाबेस। So in the Firebase we have a database like Cloud Firestore. So जो होता है NoSQL database है जहाँ अपन डेटा को स्टोर करते हैं कलेक्शंस में, कलेक्शंस के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड इनसाइड द डॉक्यूमेंट्स यू कैन हैव अ मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो ये क्लाउड फाइल स्टोर है, इट्स a NoSQL database where you can store like the textual informations। और ये पूरा का पूरा टोटली सर्वलेस आर्किटेक्चर वर्क करता है मीन्स लाइक आपको डेटा बस स्टोर करना है, आपका डेटा का स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना है और बस आपको स्टोर करना है। इसके लिए ऑटोमेटिकली करेगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सिक्योरिटी पार्ट, जस्ट आपको कुछ सेटअप सिक्योरिटी लॉजिक अप्लाई करना है एंड दैट्स इट। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट क्लाउड फायर स्टोर कि जनरली आपने देखा होगा व्हाट्सएप में कि अगर यूजर आउट ऑफ द नेटवर्क होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो तो टेम्परेली पड़ा रहता है बट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होने के बाद आपका मैसेजेस ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सिमिलरली क्लाउड फायर स्टोर भी ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि लाइक आपका डेटा होगा, आप स्टिल एक्सेस कर सकते हैं डेटा को अगर आप आउट ऑफ इंटरनेट जोन में हो। तो ये डेटाबेस बहुत ज़्यादा प्रिफरेबल होते हैं व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग अ लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस और विद वेब एप्लीकेशन जहाँ इंफॉर्मेशंस होती है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रीड ऑपरेशंस होते हैं। तो वहाँ इन टाइप के डेटाबेस को ज़्यादा प्रेफर करा। So then I'll give you the example like how we can store the information in Cloud Firestore. So as I mentioned कि like ये NoSQL database है। तो NoSQL database में generally we have a collections. Inside collections we can have a documents and each documents can have a data. So data can be anything. It may be around the JavaScript object, the text file, array, uh, objects, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो लाइक ये एग्जांपल है कि लाइक जैसे पहले मैंने एक डेटाबेस रेफरेंस क्रिएट करा, सो आई कैन क्रिएट अ डेटाबेस रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ firebase.firestore एंड डेटाबेस रेफरेंस डिफाइन बनाने के बाद देन यू नीड टू डिफाइन द कलेक्शंस कि लाइक मेरे पास एक कलेक्शन है यूजर्स का, उस यूजर्स नाम के कलेक्शंस में मेरे को एक डॉक्यूमेंट ऐड करना है। तो डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए वी नीड टू कॉल द ऐड मेथड एंड इनसाइड वी कैन पास द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि मैंने नेम पास कर दिया, ईमेल पास कर दिया एंड दैट्स इट और ये डेटा ऐड हो जाएगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो ऐड मेथड के अंदर आपको पास कर दोगे तो वो एक्सेप्ट मिलेगा। बट रिमेंबर दिस लाइक वी नीड टू पास इन लाइक इन टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। और key value pair can be anything. It may be around like सब ग्रुपिंग कर सकते हो, वो सारा आप कर सकते हो इसमें। एंड अगेन अगर डेटा को ऐड करना है सो यू कैन यूज ऐड मेथड
अगर डेटा को रीड करना है देन यू कैन यूज गेट मेथड, डेटा को डिलीट करना है देन यू कैन यूज डिलीट मेथड, data को update करना है then you can use update method. So there are n number of methods inside the Firebase documentations. Documentation को जैसे ही आप explore करोगे you will get to know about multiple functionalities के लिए कौन सा method में क्या चीजें हैं, क्या वो functionality दे रहा है, वो क्या क्या achieve कर सकते हो. Then we have a database is called as Firebase Realtime Database, जो basically अपना होता है like सिंपल और लाइक वेरी सिंपल एप्लीकेशंस. जैसे कि आपने गूगल डॉक्स यूज किया होगा तो जनरली गूगल डॉक्स में क्या होता है कि अगर मल्टीपल यूजर एक साथ वर्क कर रहे होते हैं गूगल डॉक्स पे तो यू विल गेट द आइकॉन के राइट साइड में टॉप पे आपका आइकॉन दिखने की इस गूगल डॉक पे राइट नाउ 5 यूजर आर व्यूइंग दिस पर्टिकुलर गूगल डॉक. अगर यहाँ में भी गूगल डॉक पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपको उनका कर्सर भी दिखता है, उनका वो दिखता रहता है कि उनके रियल टाइम चेंजेस दिख रहे हैं. तो ऐसे स्मॉल स्केल एप्लीकेशन जहाँ छोटी छोटी यूटिलिटीज है वो रियल टाइम आपको चेक करनी है तो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ फीचर्स विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम डेटाबेस. बट क्लाउड फायरस्टोर इज मोर अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी कि लाइक जब आपको वेरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट करनी है देन यू कैन यूज क्लाउड फायरस्टोर. बट अगर आपको रियल टाइम सिंकिंग थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्सिटी है देन यू कैन यूज फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस. एंड अगेन यहाँ भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो जेसन की फॉर्मेट में इट विल लुक लाइक ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. एंड ये भी ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर है मींस यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डेटाबेस स्केलेबिलिटी पार्ट ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा. एंड देन हियर वी हैव अ मल्टीपल सिक्योरिटी रोल्स you can apply. So I'll give you the example. Let's say एक JavaScript object I can like एक object है मैंने object define करा and यहाँ मैंने key value पे store कर दी. So for adding a data, we need to you call like set method for like जो एक रेफरेंस क्रिएट करता है तो यहाँ एक डेटा को ओवरराइट भी कर सकता है और एक नई यूनिक की जनरेट करता है. तो वो सारा एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिकल वे में कि लाइक हाउ वी कैन कॉल दिस फंक्शन एंड हाउ द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी stored. And then the next one part is the cloud storage. Generally, we have created a website. So website create करी, authentication करा, Firebase authentication से user का data store करा cloud Firestore पे. Now user want to upload their profile picture. तो प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करने के लिए वी कैन यूज दिस सर्विसेज क्लाउड स्टोरेज जहाँ अपन यूजर का इमेजेस स्टोर कर सकते हैं या मे बी यूजर के डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं मीन्स पैन कार्ड और मे बी आधार कार्ड जो केवाईसी होते हैं एप्लीकेशन में आप करते हो तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप एज अ स्टोरेज सर्विसेज पे स्टोर कर सकते हो. Again, it's a trusted infrastructure because you can trust on Google and like it's a scalable solutions. You don't need to worry about के data कितना store हो चुका है कितना और scale करना है applications का तो वो सारा manage करेगा. And you can apply the security rules कि like किस documents किस images और किस data पे कितना access देना है. You can like define the rules for the access. So I'll give you the example कि let's say मेरे पास एक image file है उस image file को मेरे को upload करना है cloud storage में. So first we need to create a database reference. So here we have a database reference DB. Right. अब इसके अंदर we need to like for uploading a file. So upload file करने के लिए we need to invoke the port method. Port method के अंदर मैंने वो file pass कर दी. So let's say I have a image file तो वो image को मैंने upload कर दिया and that's it और वो file upload. और अगर मेरे पास मे बी ऑडियो फाइल है तो मैं ऑडियो फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ वो सारा चीज. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन पार्ट इज द होस्टिंग कि जनरली वी एज अ वेब डेवलपर्स वेबसाइट तो अपन क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट एंड वी कैन अप्लाई द authentication with the Firebase hosting or we can use Cloud Firestore for storing the information और या फिर images upload करनी हो तो we can use Firebase cloud storage. Now we need to host our website. तो website host करने के लिए आप use ले सकते हो Firebase hosting. It's a free of cost services. You can host your website free at zero cost. And like जो आपकी website होती है वो deploy होती है वो Google के infrastructure पे deploy होती है और वो जो website आपकी जो पड़ी रहेगी उनकी HTML CSS JavaScript के code तो जहाँ स्टोर होंगे वो एसएसडी पे होंगे. एसएसडी इज मच मोर फास्टर देन द ऑप्टिकल डिस्क.
तो ये जो कंटेंट डिलीवर होता है मीन्स आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो आपकी वेबसाइट पे फर्दर आप पास होगे बिकॉज आपका डेटा स्टोर होगा एसएसडी पे और यू विल गेट द फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट एंड यू विल गेट you can easily deploy your website in just simple line of command like Firebase deploy and that's it. With the help of this command, you can deploy your website. And then the next services is all about Firebase Cloud Functions. So जैसा मैंने बताया था कि like Firebase is a backend as a services. So यहाँ बहुत सारे backend services है. Like जैसे कि मेरे को user को authentication करना है, then we can use Firebase authentication. अगर data storage करना है, so then we can use a cloud Firestore or the real-time database. अगर मेरे को कोई फाइल अपलोड करनी है मीन्स द ब्लॉक टाइप ऑफ डेटा है, then I can use Firebase storage. अगर मेरे को वेबसाइट होस्ट करनी है देन वी कैन यूज फायरबेस होस्टिंग बट अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग लेट्स से आई वांटेड टू यू मेक माय कस्टम बिजनेस लॉजिक सो वो मेरे को कस्टम बिजनेस लॉजिक लिखने हैं देन वी कैन यूज क्लाउड फंक्शंस तो क्लाउड फंक्शंस में क्या है कि लाइक आप अपने कस्टम बिजनेस लॉजिक डिफाइन कर सकते हो और वो सीधा आप रन कर सकते हो क्लाउड फंक्शंस पे और ये क्या होते हैं लो मेंटेनेंस होते हैं दिस मीन्स आपको कोड बस लिखना है और उसको डिप्लॉय कर देना है और वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा आपका बस ये कि कोड पे फोकस करना है कोड आपको रन करने वाला पार्ट है वो क्लाउड फंक्शंस रन करेगा कितना ट्रैफिक आ रहा है कितना ट्रैफिक चाहिए वो सारा बैलेंस करते हैं वो सारा का सारा सर्वरलेस वो पूरा ये मैनेज करेगा क्लाउड फंक्शंस ये मैनेज करना इन टर्म्स ऑफ लाइक कितना ट्रैफिक आ रहा है कितना एलोकेशन चाहिए वो सारा भी आपको करने की जरूरत नहीं है जस्ट फोकस ऑन द कोड पार्ट तो यहाँ आप अपने बैकएंड बिजनेस लॉजिक लिखो और उसको डिप्लॉय कर दो दैट्स इट or you can write your cloud functions with the help of JavaScript. तो JavaScript में आप अपने functions define कर सकते हो और if you are using TS, the TypeScript, you can use the TypeScript concept. The next step is Firebase extension. So generally Firebase extension में क्या होता है कि like यहाँ pre-built cloud functions है कि generally I'll give you the example. Let's say you have created a website जहाँ यूजर अपना अकाउंट लॉग इन करेगा तो अकाउंट लॉग इन करने के लिए आपने यूज लिया फायरबेस ऑथेंटिकेशन अकाउंट लॉग इन करने के बाद यूजर अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेगा तो वो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए आप यूज कर रहे हो फायरबेस स्टोरेज अब यूजर ने अपना इमेज होता है वो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता है सो लेट्स से उसकी प्रोफाइल पिक्चर की साइज जो इमेज की साइज होती है वो अराउंड 100 MB है तो एक यूजर ने अपनी इमेज अपलोड करी गूगल के सर्वर पे जिसकी साइज थी 100 MB तो ऐसे 10,000 लोगों ने 100 MB की इमेजेस स्टोर करने लग गए तो डेटा की जो साइज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड दैट इज नॉट अ लाइक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैं टॉक अबाउट बीइंग एज अ डेवलपर कि अपन इमेज को ऑप्टिमाइज करके या उसकी साइज को रिड्यूस करके अपन डेटाबेस पे स्टोर करते तो वो ज्यादा बेटर रहता तो लाइक हियर वी हैव अ प्री बिल्ट क्लाउड फंक्शंस जो बने बनाए आपको मिल जाएंगे फायरबेस एक्सटेंशन में कि लाइक जब यूजर अपनी फाइल या प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता है तो रियल टाइम क्या करेगा उसकी इमेज को पहले छोटी करेगा मीन्स छोटी इन टर्म्स ऑफ रीसाइज करेगा मे बी द साइज कैन चेंज इन और या फिर मे बी फाइल को फॉर्मेट में चेंज कर देगा जैसे एक जेपीजी फाइल है उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर देगा या पीएनजी को जेपीजी में कन्वर्ट कर देगा यू कैन मेक दिस लॉजिक फॉर क्लाउड एक्सटेंशन और मे बी जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई जो आपकी एप्लीकेशन होती है रशिया पे चल रही है तो रशियन लोग बेसिकली आपके एप्लीकेशन में जो इनपुट करेंगे वो रशियन लैंग्वेज में करेंगे बट वो रशियन लैंग्वेज में डायरेक्टली आप इनपुट लेके और डेटाबेस में स्टोर नहीं कर करोगे तो यू कैन डू दैट बट एट द एंड इन द डेटाबेस यू नीड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन अ वन लैंग्वेज मीन्स डेटाबेस में अपन को एक ही लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो अगर लेट्स से इंग्लिश में स्टोर कर रहे हो तो आपको रियल टाइम क्या करना पड़ेगा उसकी जो लैंग्वेज जो इनपुट कर रहे हैं तो उसको ट्रांसलेट करके फिर डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा तो वो सारा ट्रांसलेट टेक्स्ट है वो यू कैन परफॉर्म और मे बी यू कैन ट्रिगर सम मेल्स के लाइक जैसे कि जब यूजर ने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की देन यू कैन ट्रिगर सम मेल्स देयर आर प्री बिल्ड क्लाउड एक्सटेंशंस फायरबेस एक्सटेंशन दैट यू कैन यूज जस्ट आपको सर्च करना है फायरबेस एक्सटेंशन और आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिल जाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आप यूज ले सकते हो देन वी हैव फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग
तो जनरली मैंने जो एग्जांपल दिया था कि लेट्स से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस और सेम विद इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मे बी द जीमेल यू विल व्हेनेवर यू विल गेट एन मेल तो वो सारा नोटिफिकेशंस होता है वो आप परफॉर्म कर सकते हो सिमिलरली इन योर एप्लीकेशंस नोटिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ कि लाइक आप मोबाइल प्लेटफॉर्म पे तो नोटिफिकेशन दे सकते हो सिमिलरली द वेब प्लेटफॉर्म पे भी आप नोटिफिकेशन दे सकते हो कि लाइक आई गेस आता होगा फेसबुक की इंस्टाग्राम की और ट्विटर की या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इफ यू enable the notification you will get the notification in your desktop platform as well as so you can make the notifications with the help of Firebase Cloud Messaging. It's a free of cost. कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा फ्री है यहाँ आप नोटिफिकेशन ट्रिगर कर सकते हो सेटअप यूजर ग्रुप पे कर सकते हो कि लेट्स से मेरे पास 100 लोग हैं तो मेरे को नोटिफिकेशन ट्रिगर करनी है 50 लोगों को एंड देन 50 लोगों को डिफरेंट टाइप का मैसेज ट्रिगर करना है वो भी मैं ट्रिगर कर सकता हूँ और मैं इंडिविजुअल डिवाइस से भी नोटिफिकेशन ट्रिगर कर सकता हूँ तो वो सारा का सारा मैं काम कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लाउड मैसेजिंग और यहाँ अगेन कुछ कॉम्प्लेक्स वाला कोड नहीं लिखना है इवन लाइक हर एक सर्विसेज में इन्होंने प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं just we need to explore the function and we need to call the functions for individual services. And then Firebase dynamic links like generally क्या होता है कि let's say अपना like जैसे एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं तो पर्टिकुलर पेज का एक यूआरएल जनरेट हो जाए और वो यूआरएल आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और वो फ्रेंड वो यूआरएल ओपन करे तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के वो वाले पर्टिकुलर पेज या एक्टिविटीज को ट्रांसफर कर दो तो वो आप परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फायरबेस एनालिटिक्स और यहाँ से आपको एनालिटिक्स मिलती है कि लाइक कितने यूजर ने उस पर्टिकुलर यूआरएल को एक्सेस करा किस लोकेशन से करा कितने क्लिक्स हुए you will get this kind of information with the help of Firebase dynamic links. And other than that, you can create a shortened URL with the help of Firebase dynamic links. So this is all about like being as a developer, we can use this kind of services like whenever we want to authenticate the user, we can use Firebase authentication. Database के लिए use लेना है, then we have a cloud Firestore, the real-time database. या फिर maybe we have a block type of informations where we need to upload the images, video file, audio file, then we can use cloud file storage. If you want to host your website, then you can use Firebase hosting. या फिर आप अपने custom business logic लिख सकते हो with the help of cloud functions. Yeah, there are predefined pre-built cloud functions that you can use like translate text, trigger a mail, or if you want to send a push notification, then you can use Firebase Cloud Messaging. और यूआरएल शॉर्टनर करना है या फिर डायरेक्टली एक्टिविटी पे स्विच करना वो सारा काम कर सकते हो आप Firebase Analytics में. So till that time, like if you have any questions, you can ask the question. Then we can move forward to the next part. Okay. So, simple way, like with the help of Firebase, you can make anything. You just need to focus on the front end part. Uh, Firebase is the backend as a services. You just need to explore the services, what type of services you want to implement. Just search for the services and their functionalities. आपको methods मिल जाएंगे वो method आप directly invoke करके आप application build कर सकते हो very fast and you can build anything with the help of Firebase. So, like you can build anything. So, I'll give you a simple example. This is a simple applications I have built with the help of Firebase. So, what I'll do, I'll share my screen. In sharing, this is a URL. Share my thoughts. So, you can open this URL in your current system, and you can send some feedback. It's anonymous feed. It's not an anonymous feedback. Yeah, it's an anonymous feedback we are collecting. So you can share anything, any thoughts as of now, जो भी आपको लगे. So ये एक simple application I have built with the help of Firebase. Here I'm using Firebase database, means the cloud Firestore I'm using, जहाँ as a anonymous information I'm collecting और वो information को access करने के लिए I have created a admin dashboard. जो मेरा admin dashboard कुछ इस तरीके से है. इसमें मैंने फाइरबेस ऑथेंटिकेशन लगाया मीन्स गूगल के थ्रू मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ और जब कोई यूजर मैसेज पास करेगा आई गेट द इंफॉर्मेशन कि अभी तक किसी ने किया सो ये इंफॉर्मेशन डाली इट्स एनोनिमस फीडबैक आई एम कलेक्टिंग
तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन आई है, उसका मैसेज ये आया और आई कैन परफॉर्म सम एक्शंस. It's just like as a CRUD applications I have created. So yeah, as of now, two users are accessing this applications. They have shared the feedback. So ये रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो. तो ये इस टाइप के एप्लीकेशंस अपन क्रिएट कर सकते हैं मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर. 1 घंटा भी बहुत कम बोलूंगा, बट यू कैन ब्रेक लाइक एनोनिमस फीडबैक टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. तो जनरली क्या होता था 2018 या 2019 में एक यूआरएल जनरेट होती थी. लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करते थे कि आप अपना एनोनिमस फीडबैक शेयर करो मेरे बारे में समथिंग. सो दिस इज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ फायरबेस. यहाँ पर सिंपल अपन ने दो सर्विसेज यूज लिए, तीन सर्विसेज. लाइक फर्स्ट वन इज फायरबेस होस्टिंग. क्या मतलब ये वेबसाइट को मैंने होस्ट करा है फायरबेस होस्टिंग पे. डेटाबेस आई एम यूजिंग क्लाउड फायरस्टोर. फॉर ऑथेंटिकेटिंग द एडमिन डैशबोर्ड आई एम यूजिंग फायरबेस ऑथेंटिकेशन, जहाँ ऑथेंटिकेशन करने के बाद मेरे को लाइक डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा हूँ ये सारा चीज. ठीक है. So I'll give you the like example as well as like this is a Firebase console. यहाँ ये आपका Firebase console होता है. जस्ट आपको गूगल पे सर्च करना है Firebase console और ये मे बी गो टू द console.firebase.google.com और वहां से आपको Firebase console दिख जाएगा. ये सारा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा एक एक करके अभी. और सो ये कंसोल है. यहाँ से आप डेटाबेस में जाओगे तो डेटाबेस में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है. दिस इज अ नो सिक्वल डेटाबेस. So no SQL database में here we have a collections. Inside this collections we have this document and inside this document we have this information. जहाँ अपनी information आई है, the message का नाम है hello hello and the timestamp we are collecting it's 9 September and this particular time. वापस अगर मैं चेक करूंगा कि लाइक रूल्स में जाऊंगा तो हियर वी कैन अप्लाई द सिक्योरिटी रूल्स कि लाइक कितना डेटा को क्या एक्सेस देना है. वो सारा अपन सिक्योरिटी रूल्स में डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू. सो नाउ अब मैं कोड पार्ट में आऊंगा तो आई शेयर माय एंटायर स्क्रीन टिल दैट टाइम. लाइक अगर किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट हो तो आप पूछ सकते. ओके. सो आई शेयर माय एंटायर स्क्रीन. ओके आई स्टार्ट. ओके. सो सिंपल मैं एग्जैक्टली ये एप्लीकेशन बिल्ड नहीं करूंगा. शेयर योर थॉट्स बिकॉज लाइक वी हैव अ लेस टाइम. But I'll share the GitHub repository. You can check out the GitHub repository and you can create. Again, like I'll share the URL with you all once again. You can share your anonymous feedback. I'm not collecting any informations because I'll show you the. I'm sharing my entire screen. सो लाइक ये एडमिन डैशबोर्ड है जहाँ से आपको ये दिखेगा. मैं लॉग आउट करके भी दिखा सकता हूँ. दिस इज एडमिन डैशबोर्ड. इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं इनिशियली पूछेगा कि यू नीड टू लॉग इन विथ योर द यूजर अकाउंट. सो मैंने लॉग इन करा. लॉग इन करने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन दिखेगी. Even I can delete the information. Like so data as an anonymous feedback I'm collecting, I can delete the data or we can apply third operations. So एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं फायरबेस पे. तो फायरबेस पे अपन को एक्सेस करना है तो जस्ट गूगल पे सर्च कर लो आप फायरबेस. यू विल फाइंड द लिंक firebase.google. सो दिस इज अ मेन लिंक जहाँ आपको फायरबेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखेगी. Like what type of products we have in terms of like again I've shared the three categories like build better applications. Then we can focus on the user quality कि like कैसे quality आप applications पे focus कर सकते हैं. And then we have engagements, the grow part. So here we have all solutions. Like if you can go to the solutions part, here we have a different type of solutions. Or you can go to the build like products. Here we have all the products like real-time database, framework, ये सारे आपको information यहाँ से मिल जाएंगे. So what I'll do, I'll go to the console part. Just ये आपकी link है, इस पे आप just click करोगे, ये right top पे दिखेगा go to console. तो जैसे आप console section पे जाओगे तो यहाँ आपको एक कुछ इस तरीके से dashboard दिखेगा. So here you can create a project. So what I'll do, I'll create a new project. यहाँ मैं अपना project का name decide कर सकता हूँ. Let's say मैंने अपने project का नाम डाला DevCharcha -tf. Okay. So ये मेरा project का नाम है. I'll click on the continue part. Then
ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका गूगल एनालिटिक्स का कि लाइक जैसा मैंने बोला था कि विल गेट द रियल टाइम रिपोर्ट अबाउट द यूजर्स एनालिटिक्स रिपोर्ट के लाइक कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम विच लोकेशन विच सिटी, ये सारा इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो. So you need to enable the Google Analytics for this particular project and then click on the continue part. अब ये गूगल एनालिटिक्स का पूछेगा तो यू कैन, अगर आपके पास गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है तो यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट द अकाउंट और यू कैन क्रिएट a new account and then click on the create project and just wait for this 2-3 minutes maximum. Quick question, doubt? Okay, so my project is ready. I'll click on the continue button. Okay, so this is my project dashboard, जो Firebase का दिखेगा. So again, we have all the products. Like if you go to the all the product section, so जहाँ सारे जो मैंने products का services का मैंने idea दिया था, like authentication, ये नए आए हैं, app check, cloud firestore, real time database, extension, storage, function, hosting, machine learning, remote config. There are multiple things. You will find these information about these products. So यहाँ से आप categorize भी करेंगे कि like if you want to build an application, for building an application there are these services that you can use like authentication. जैसा मैंने बोला था कि application को authenticate करना है आपको user को, so you can use Firebase authentication or you can use app check for application की check करना quality and all. This one is for database part कि like यहाँ cloud firestore है, real time database है, then we have an extension, storage, hosting, functions, real time database and configure. So what I'll do, ये मेरा dashboard open हो गया. So like first we need to select the platform कि like अभी मैं application build कर रहा हूँ तो मेरे को कौन सा platform लेना है. So सबसे पहले मैं right now I'm using web platform, so I'll click on the web icon and here I can select a nickname. So let's say I'm typing DevCharcha TF. Okay, and then click on the register app. Okay. सो ये जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको ये अपनी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी. So here we have two options like if I'm using Vue.js or maybe Angular or Vue, so we can use npm module, otherwise you can use script tags. So generally मैं अभी यहाँ ये स्क्रिप्ट टैग के थ्रू आपको एग्जांपल दूंगा कि लाइक कैसे अपन फायरबेस की सर्विसेज का एक्सेस करते हैं. So I'll copy this particular script tag and I'll open the VS Code and एक VS Code में मैंने एक फाइल क्रिएट करी index.html. ये मेरी index.html है और यहाँ मैंने HTML का एक बेसिक्स टेम्पलेट ले लिया. ओके, एंड जो मेरा स्क्रिप्ट टैग है वो मैंने बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया. ये जो मेरा फायरबेस वाला कोड जो मेरे को मिला था यहाँ से. ओके, सो ये मैंने यहाँ से कोड कॉपी कर लिया एंड देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू. दैट्स इट. अभी मैंने क्या करा है, ये अपना जो प्रोजेक्ट है इसको कनेक्ट करा है ये फायरबेस से. अब मैं यूज लूंगा क्लाउड फायर स्टोर. क्लाउड फायर स्टोर इज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. तो ये है क्लाउड फायर स्टोर. इस पर क्लिक करा. क्लिक करने के बाद फर्स्ट वो बोलेगा कि वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस. सो आई क्लिक ऑन द क्रिएट डेटाबेस पार्ट. Again, then we have two options. Like if you are building applications, then you can use test mode. If you are making applications live, means the production वाले part पे जा रहे हो, then you can select the production mode. So Abhi now, right now we are creating applications, developing means the testing part. So अभी मैंने test mode enable करा है and click on continue. And here I can select the reason कि like मेरी ये जो data है store करना है कौन से reason पे store करना है. So it's totally up to you as of now. It's a free of cost. So like totally. Again, let's say I'm selecting Mumbai location and click on the enable part.
तब तक लाइक ये मेरा HTML है। HTML में आई कैन क्रिएट अ div element, so let's say I want to add a data. So डेटा ऐड करने के लिए I'll create a button, तो मैंने एक बटन क्रिएट करा और इस बटन पे डाला ऐड डेटा। अब मेरे को इस बटन पे एक्शन परफॉर्म करना है, तो आई कैन क्रिएट आईडी, सो लेट्स से ऐड BTN। एक मैंने आईडी परफॉर्म करी। अब I can write a logic, like here we can write a logic, a document dot get element by ID. So here we can call document dot get element by ID. My ID is add BTN, तो ID है, इसको मैंने कॉपी करा और ये मैंने ID पास कर दी। एंड आई कैन परफॉर्म द इवेंट लिस्टनर्स, लाइक जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा एक फंक्शन कॉल हो, तो फंक्शन का नाम है लेट्स से ऐड डेटा। और यहाँ मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, इस फंक्शन का नाम है, तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन करा है, दिस इज ऐड डेटा। ओके। सो अभी जनरली मैं सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कंसोल लॉग मैंने लगा दिया कि लाइक क्लिक। ठीक है। अभी जस्ट मैंने कुछ नहीं करा है, जस्ट मैंने एक बटन क्रिएट करा है। बटन क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ लॉजिक लिखा है कि जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक फंक्शन कॉल हो और वो जो शो करेगा ये। एंड आई एम यूजिंग VS कोड एक्सटेंशन लाइव सर्वर, सो इस पर क्लिक करा। जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ मुझे दिख गया और यहाँ से मैं डेवलपर टूल्स में जाके मैं चेक कर सकता हूँ कंसोल में। ओके। सो जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा तो इट्स शोइंग क्लिक, मीन्स ये फंक्शनलिटी अभी मेरी वर्क कर रही है। ठीक है। सो अब वहीं आते हैं फायरबेस पे और कंसोल पे। तो दिस इज माय फायरबेस कंसोल, जो मेरा क्लाउड फायर स्टोर है, यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो कलेक्शंस। सो आई गिव इट अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स से मैंने एक कलेक्शंस क्रिएट करा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन है। इस कलेक्शंस के अंदर वी कैन हैव अ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। सो लेट्स से डॉक्यूमेंट की आईडी मैंने रैंडम डाल दी, अदरवाइज लाइक देयर इज अ बटन क्लिक ऑन द ऑटो आईडी, अदरवाइज यू कैन मेंशन द आईडी ऑफ द डॉक्यूमेंट मैन्युअली। अब मैंने डाल दिया स्टूडेंट का नेम, मीन्स ये डॉक्यूमेंट के अंदर स्टूडेंट का नेम है। एज सुन उसका एज मेरे को स्टोर करनी है, तो एज स्टोर कर दी 23, एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। तो ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट आ गया, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अंदर ये डेटा है। दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो लेट्स से नेम डाला, इसका डाला S2, एज डिफाइन करी, हाँ लेट्स से एज डिफाइन करी 21। ठीक है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो ये इस तरीके से डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं। इवन इनसाइड द डॉक्यूमेंट्स वी कैन क्रिएट अ सब कलेक्शंस, ये सारा पार्ट आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हो वन बाय वन। सो अभी इनिशियली मैं क्या करूंगा कि लाइक एक डेटा होता है, मैं ऐड करूंगा क्लाउड फायर स्टोर में विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। सो अभी ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइक यहाँ मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि लाइक फर्स्ट वी नीड टू इनिशियलाइज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इनिशियलाइज करने के लिए एक लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट करा है, इससे मेरे को इनिशियलाइज वाला एक फंक्शन मिला है। और मेरी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और मैंने फायरबेस के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया है। एंड दिस वन इज फॉर द एनालिटिक्स, लाइक इफ यू वांट टू यूज द एनालिटिक्स देन वी कैन यूज एनालिटिक्स। और उन्होंने बोला है कि लाइक अगर आप कोई और सर्विसेज को यूज ले रहे हो तो देन यू कैन यूज फायरबेस, ये वाली लिंक है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो मैं ये लिंक को कॉपी करूंगा और यहाँ मैंने ओपन करा। ठीक है। सो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि लाइक अगर लेट्स से मेरे को यूज लेना ऑथेंटिकेशन, तो मेरे को इस पर क्लिक करना पड़ेगा और ये लाइब्रेरी मेरे को ऐसे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे एनालिटिक्स की इंपोर्ट करेंगे तो वैसे ही मेरे को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो व्हाट आई डू, आई क्लिक ऑन द अवेलेबल लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशंस, और यहाँ से मेरे को है ना ये अवेलेबल लाइब्रेरीज दिखेगी और ये सारी अवेलेबल लाइब्रेरीज है। तो अभी मैं ले रहा हूँ क्लाउड फायर स्टोर, बिकॉज मेरे को क्लाउड स्टोर फायर स्टोर में डेटा ऐड करना है, तो ये लाइब्रेरी को मैंने करा कॉपी और इस लाइब्रेरी को मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है। तो बिकॉज क्योंकि मेरे को यूज लेना है क्लाउड फायर स्टोर, और क्लाउड फायर स्टोर में मेरे को डेटा डालना है या फिर CRUD ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो मैंने क्लाउड फायर स्टोर की लाइब्रेरी को ऐड कर दिया। अब मेरे को बेसिकली क्लाउड फायर स्टोर पे वर्क करना है, तो व्हाट आई डू, आई गो टू द डॉक्यूमेंटेशंस, बिकॉज मैं आपको पूरा डॉक से समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। So Cloud Firestore is a part of build better applications. I'll click on the build section. And then here we have Cloud Firestore. Yeah, just Cloud Firestore. I'll click on the introduction part. ठीक है।
सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का बताया कि लाइक हाउ वी कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस पार्ट। लाइक फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ कलेक्शंस, inside collection we can have multiple documents and each documents can have a multiple information in terms of key pairs. सो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है इन्होंने सिंपली सारा बताया हुआ है। सो आई विल क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड बटन। सो यहाँ से आपको दिखेगा कि लाइक कैसे आप ये डेटाबेस में इनिशियलाइज कर सकते हो और ये सारा प्रोसेस ये पूरा इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि लाइक मेरे को ये फंक्शन यूज लेना पड़ेगा गेट फायर स्टोर, और जो मिलेगा इस लाइब्रेरी से ये। ठीक है, इससे मेरे को है ना फायरबेस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू, आई क्लिक const db, दिस इज अ डेटाबेस रेफरेंस, गेट फायरस्टोर इनसाइड मैंने पास कर दिया ये ऐप जो मैंने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करा था, एंड दैट्स इट। तो मेरा क्या है कि डेटाबेस रेफरेंस अभी बन गया। अब डेटाबेस रेफरेंस बन गया तो मेरे को डेटा को ऐड करना है, तो आई गो टू डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लिक ऑन द ऐड डेटा पार्ट। सो डेटा को जब भी ऐड करना होता है तो हियर वी हैव टू मेथड्स, लाइक फर्स्ट वन इज the docs and this one is set docs। और या फिर मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ। सो स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो हियर वी हैव इंफॉर्मेशन के लिए कैसे आपका डेटा स्टोर होता है, ऐड डेटा। ओके, सो ये इन्होंने एग्जांपल दिया कि लाइक कैसे डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना होता है। तो आई विल गिव यू द सिंपल एग्जांपल दिस। सो क्या करना है कि लाइक ये दो है आपके मेथड्स, लाइक ये है डॉक और सेट। ये आपको कॉपी करना है और यहाँ आपको पेस्ट करना है, दैट्स इट। यहाँ क्लाउड फायरस्टोर के अंदर आपको ये फंक्शंस मिलते हैं। अब फर्स्ट वी नीड टू लाइक कॉल दिस मेथड, दैट्स इट। सो आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट हियर। सो सबसे पहले ये एसिंक अवेट वाला कॉन्सेप्ट ले रहा है, तो आपको यहाँ आपको एसिंक अप्लाई करना पड़ेगा, वो ये से फंक्शन। ठीक है, अब डॉक में डीपी रेफरेंस, ये डेटाबेस रेफरेंस, लेट्स से आई वांटेड टू इनिशियलाइज द स्टूडेंट्स यूजर्स। यूजर्स नाम का मेरा कलेक्शंस है और मेरे को कस्टम की डिफाइन करनी है, तो आई कैन डिफाइन द कस्टम की, लेट्स से यूजर वन। और उसके अंदर मेरे को डेटा पास करना है, तो वो डेटा मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ लेट, या ये फंक्शंस के अंदर ही मैं डेटा डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये डाला लेट डेटा इज इक्वल टू, यहाँ मैंने डाला नेम और यहाँ मैंने डाल दिया लेट्स से रिचार्ज, और एज मैंने डिफाइन कर दी लेट्स से 26, और ये मैंने डेटा यहाँ पास कर दिया, एंड दैट्स इट। और ये आपको ये एज अ ये इंफॉर्मेशन दे देगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टोर res इज इक्वल टू अवे एंड यू कैन कंसोल लॉग। यस, सो सेव एंड देन रीलोड द पेज। ठीक है, सो व्हेन आई क्लिक ऑन द ऐड बटन, जस्ट वेट करा, थोड़ी देर के बाद इंफॉर्मेशन आ गई और ये अनडिफाइंड अभी आ रहा है बिकॉज अभी मैंने कुछ एग्जैक्टली नहीं करा है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट रीलोड द पेज। सो मेरा ये यूजर्स नाम का कलेक्शंस बन गया, यूजर्स के अंदर ये यूजर वन का डॉक्यूमेंट बना, ये यूजर वन का डॉक्यूमेंट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये इस तरीके से आप डेटा ऐड कर सकते हो। हियर वी हैव लाइक डॉक्यूमेंटेशंस, यहाँ आपको हर एक डॉक्यूमेंटेशन में सेट ऑफ फंक्शंस दिखेंगे कि लाइक ये आपकी फायरस्टोर वाली लाइब्रेरी है। डेटा ऐड करने के लिए आपको ये फंक्शन यूज देने पड़ेंगे और ये यू कैन कॉल दिस फंक्शनलिटी। सो आप चाहते हो कि लाइक ऑटोमेटिकली आपका वो डिफाइन करना कि लाइक ये यूजर आईडी है, ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है मैनुअली होनी ना करके ऑटोमेटिक करना है, तो देन यू कैन डिफाइन, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड। तो लाइक यहाँ आप कलेक्शंस डिफाइन करो, यू कैन कॉल दिस मेथड, लाइक इन्होंने डेटाबेस रेफरेंस डिफाइन करा। सो व्हाट आई डू, आई गिव द एग्जांपल। सो आई कॉपी, आई कमेंट एंड आई पेस्ट। ठीक है, सो ये मेरा डेटाबेस डॉक्यूमेंट रेफरेंस ऐड डॉक्स, ये मेरा डिफाइन नहीं है तो ऐड डॉक्स को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। कलेक्शंस, कलेक्शंस मेरा इसमें नहीं है तो मैंने कलेक्शंस को भी यहाँ इंपोर्ट कर दिया। अब मेरा फंक्शंस हो गया, डेटाबेस रेफरेंस बन गया, और लेट्स से मैंने करा यूजर्स। यूजर्स के अंदर मेरे को एक और यूजर क्रिएट करना है जिसका नाम है लेट्स से सूरज, और उसका लेट्स से है 26, एज है, सेव करा। और यहाँ मैंने ये डेटाबेस डॉक्यूमेंट्स में मैंने कॉपी सेव करा और मैंने डायरेक्टली जस्ट क्लिक करा ऐड डेटा पे।
तो ये ऐड डेटा हो गया, मेरे को इन्फॉर्मेशन दिख गई कि ये डॉक्यूमेंट रिटर्न विद द आईडी ऑफ डॉक्यूमेंट आईडी। अब मेरे को क्या करना है, वापस मैं यूजर्स में जाऊंगा तो हियर वी हैव अनदर डॉक्यूमेंट जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी रैंडम असाइन हुई है और जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है। सो कुछ इस तरीके से आप फाइरबेस को यूज दे सकते हो। इट्स अगेन लाइक एक्सप्लोरिंग अ डॉक्यूमेंटेशन वन बाय वन कि लाइक आपको डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा कि लाइक कैसे आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो। Or I have created a GitHub repository as well as like and in the feedback form I'll like in the thank you mail I'll share the repository कि like list of documentations कि like कैसे आप ये applications और services को आप application को access करके कैसे पूरा access करते हो। So that's all from my end like ये आज का पार्ट था कि like कैसे Firebase को access कर सकते हैं। And like yeah, TechFerment I have created a multiple videos in the YouTube channel for individual services like Firebase authentication lane and कैसे आप use लोगे, let's say you want to send a push notifications, how we can send a push notification with the help of that platform. You can check out the videos. I have written a multiple articles over the mediums, so you can check out the medium and find my name and find the information about the Firebase services. Yeah, it's time for the question. Like, if you have any questions. You can implement the Google sign-in features. So I'll share my screen. Uh, so for implementing the Google sign-in features, I suggest you to go to the documentation. So मैं पूरा docs वाइज explain करना ज़्यादा better prefer करूँगा. So in the docs we have a build sections for the authentications, and inside the authentications, let's say if we want to authenticate the user with the help of web platform. So here we have Google sections. सो यहाँ से आप चेक करोगे तो ये पूरा प्रोसेस ये है कि लाइक पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथ लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने क्लाउड फायर स्टोर की करी थी। इंपोर्ट करने के बाद वी नीड टू कॉल दिस मेथड। ये इससे मैंने एक प्रोवाइडर डिफाइन करा जो मेरा है गूगल ऑथ प्रोवाइडर। गूगल ऑथ प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर मेरे को ये ऑथेंटिकेशन डिफाइन करना है और ये डायरेक्टली ये फंक्शनलिटी आपको कॉल करी है, दैट्स इट। ये एक मेथड है साइन इन विद पॉपअप, लाइक जब यूजर लॉग इन करेगा तो एक पॉपअप आएगा और पॉपअप आने के बाद वो गूगल की स्क्रीन सेलेक्ट होगी कि लाइक कौन सा अकाउंट से आपको लॉग इन करना है, और यहाँ आपका प्रोवाइडर होगा जो होगा गूगल ऑथ प्रोवाइडर। और अगर यूजर सेलेक्ट करता है ऑटोमेटिकली मिल जाता है तो यूजर की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन को आप लाइक स्टोर में स्टोर कर सकते हो या मे बी लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। अगर कुछ एरर आती है तो यू विल गेट द एरर। सो ये सिंपल सा मेथड है। इसके भी मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ। मैंने गिटहब रेपोजिटरी बना के रखी हुई है फायरबेस की सेट ऑफ फंक्शंस की। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपका हार्ड लगता है तो यू कैन चेक फॉलो दिस पर्टिकुलर रेपोजिटरी फॉर फायरबेस।